And good afternoon to all of you. This press conference we have organized uh, as we are observing the anniversary. This is the third anniversary of NEP 2020, National Education Policy 2020. That means in 2020, we adopted, or this policy was enacted and adopted. And 23, of course, obviously it is the third anniversary. So what is the purpose of this press conference? Let me first tell you that towards my right, immediate right, we have the Honorable Director NERIST, Professor Murlidharji. Yeah. And then we also have Professor Okil Lago to my right, and he is immediate past Dean of the Language Faculty, Languages. And currently he is the head of the department, and he is also chairperson of today's meeting. And we have a very energetic registrar, Dr. N.T. Rikam Saab, registrar of RGU. And next to him, left side, is Professor Otam Padung Saab. Professor Padung is the immediate last head of the Department of Commerce, but currently he is a finance officer of our university. Next to Professor Padung is Madam Shama. Madam Shama is Kendriya Vidyalaya. So we are supposed to, this meeting is supposed to, membership on this table is supposed to be director, then of course officers of the RGU, and then KVK and even Navodaya Vidyalaya. But I think because of certain reasons they could not come. So this is one of the composition and aspect why we are doing this press conference. So let me tell you that if we are talking about the higher education from RGU front, RGU out of 18 verticals we have, for example, one of the vertical is multiple entry and exit, academic bank of credit. Then we have a 4-year degree program. So we almost on all verticals, even dual degree programs. In the last EC meeting, we have taken various decisions. Through those decisions, from the current batch, today is the first day of this current session, and we have implemented 4-year degree program. 4-year degree program, when two verticals are there. Now in 3 years, earlier we used to give honors in 3 years. Now we are going to give honors in 4-year degree program. And in 4-year degree program, we have two options. One, non-research aspect, and other one is research aspect. And in the colleges, you know that there is no component for research. And we have requested through AC, we have developed the letters, and we have in that meeting of Academic Council, the Honorable Special Secretary of Education, Miss I think Ira Singhal Madam was there, and she has agreed that she is going to look into our request so that we can also start the UG program for research mode. And but in the colleges we have 4-year honors program for bachelor degree, arts, commerce and science. In one of the college, Don Bosco, we also have BSW also, Bachelor of Social Works also. And all of them will be given 4-year honor program without research component. In RGU campus, to make the life easier for our student in Arunachal Pradesh, we have started the UG program. UG program with research component also. That means after 3rd year, there is a cutoff mark, CGPA. If any student is going to get up to that CGPA, he or she can offer the 4-year program, PhD, 4-year undergraduate program. The benefit of this program is that if that particular student is willing to go pursue PhD program directly, he will be allowed to do so. So these are the crucial decisions we have taken. And in RGU, 99% students
in the main campus as well as in the colleges, they have gone for academic bank of credit. That means they have done the registration through DigiLocker and they have their unique ID. And for that one, I give credit to Dr. Nani Josab. He is the chairman. Earlier chairman was Dr. Pankaj from Geology department. Now Dr. Nani Jos is there. Dr. Upamanyu Das and Miss Oriental Taggu. And they did lot of programs for the colleges also. And program was done through physical mode as well as through online mode. RGU was good enough. Rather, I should not praise myself. Praise goes to the team of RGU. Registrars have all the deans, head of the departments, and academic council member. Of course, the controller of examination, our finance officer. There we took very serious decisions, and there we have also promised that very soon we are going to look into the issue of dual degree program. That is also one of the aspects. For now, we are going to allow students for one regular degree and one degree through distance mode. But we are still waiting for government of India to give us the mandate. I mean, they have brought one order, but working document is not there. So we are waiting for them to bring out those kind of things. So from my side, this is over. And before we hand over the platform to Director Neris, I think let me hand over the platform to Registrar Saab and Otam Saab, and then we'll come to Neris. Very good afternoon to all of you. First, thank you, Honorable Vice Chancellor, for giving me this opportunity. In fact, as you have already heard about the very purpose and philosophy of new education policy, I just wanted to add on certain thing which actually this university has already undertaken. In colleges we don't have a research component, but honors component will be there. And for your kind information, simultaneously we are also starting undergraduate courses in our campus, Rajiv Gandhi University, in two programs, that is basic sciences, science stream, in four major departments, that is mathematics, physics, chemistry and statistics, that we are going to start from this session in undergraduate courses. Then similarly in social sciences we are going to have the subjects like social psychology, sociology, then anthropology and Bachelor of Social Works. So these in total 8 programs we are launching in Rajiv Gandhi University in undergraduate courses. So now the actually our efforts is to create awareness about those programs. This has been little late in the sense we could not join the CUT mode of admission. So because time has already left, so for that we have actually arranged a test, that is RGU set. Special test is being conducted for these undergraduate courses. So a student will actually get through this special RGU set test, and even we have kept option for CUT also. Certain seats, at least 30% of seats are being reserved for CUT candidates. So that way we are actually amalgamating the system, both this our RU pattern as well as national pattern. But in the coming academic session, we are going for CUT in totality.
Though this year only because of the time constraint, we are actually doing this dual mode of process in admitting students. So these are some of the information that we wanted to share. Students are actually not aware of these information. So through this press conference, we would like to share the information, dissemination the information, and I request all our press fraternity, all our like-minded people to share those information. We have time till 30th of this month. 25th application. Oh, sorry, 25th. That is till tomorrow. Till tomorrow we have time to fill up the form, and that test is scheduled on 30th of this month. Yeah. So even if you could not go through, in that test we have provision for CUT admission based on CUT also. So with this I must actually compliment our Honorable Vice Chancellor because of his initiative, because of his farsightedness and leadership. We could able to implement this NEP 2020, though we have limitations, but we could start the implementation part in the state of Arunachal Pradesh, and I must thank once again to our Honorable Vice Chancellor, and we believe with the help of all stakeholders in the university as well as outside the university, including our government, both state as well as central government, and of course UGC, under the guidance of UGC, we will actually successfully implement this NEP 22. Thank you very much. Good afternoon to all of you. I am respected Vice Chancellor Professor Sakit Kushawaji, Dr. K. N.T. Vikanji, Registrar of the Institute, and my esteemed members who are sharing this dais and media. I welcome you all. I am happy to attend this joint press conference to celebration of second Akhil Bharat Shiksha Sangam as well as third NEP 2020. Indian education system, if you see, the first NEP started in 1968. Subsequently, second NEP started in 1986, and this is the third one in 2020, this new millennium. So systems are changing, 10 plus 2 plus 3, it went on around the 86 to around 2020. Now there is a need to develop the system which caters to the present needs. In that, the 5 plus 3 plus 3 plus 4 system was evolved, and that was implemented in the Ministry of Education in the 2020 onwards. So all the institutes, heads of the institutions have a responsibility to see how we will gear up to the new changes and the societal needs and the student requirements, as well as the teachers' orientation toward the new system there. You see so in that direction, the earlier, if you see, this modularity was started as early as 1986 in NERIST. NERIST is Northeastern Regional Institute of Science and Technology. At that time, we used to take 10 after 10 plus 2 years a certificate module. If they move 2 more years, a diploma module, and 2 more years if they move ahead, a degree module. So that modularity we introduced, and then it is very difficult to accept our students or the products in the industries and the market there. How we will give a 2 years degree there? In engineering, for example, I studied 5 years engineering was there during that time. Afterwards it became 4 years. How we will give a 2 years degree? Then we said it is not 2 years degree, it is a modular thing, multiple entry and multiple exit. We can enter at different stages as well as different things. We have exit at different. After 2 years you want to go for a job,
You can go after taking 2 years certificate, and then after some years you can come again join in the 2 years next module. Then after 2 years, if you want to go for a job and come again, 2 years more you can study and get a degree there. So that system was started as early as 1986, and then that was designed by the IIM Ahmedabad, and we are successful, rather, if you say. Now this modularity will help multiple entry, multiple exit. That is better for the students as well as the industries. At a time you can't study say 5 years time, you have to 6 years time. Then you can go for their study, acquire some knowledge in industries, and then come for studies again with the tacit knowledge there. So that way this modularity was started, and it was successful. It is one more step ahead the modularity has come. Suppose if 3 years is there, 1 year you study, you will get certificate. 2 years if you study, advanced certificate. Or 1 more year, likewise, 4 years degree, it was made with honors degree. And after 4 years you can study the post-graduation 1 year also there. The chancellors are told that you can go for various systems, multiple entry system, as well as the dual degree systems, etc. started there. That rigid framework to the flexible thing we are moving ahead in this 21st century, so that the students will gain benefit of that, and their academic credit bank also. All the institutes mostly we also started academic credit bank, so that whatever you complete the credits, it will be stored in your account. You can come after 5 years, you can come and study there. There is no, your bank account will be there. Only no interest will be given there, but only thing you will be getting the systems there. So that education system, the knowledge capitalist, now we are trying. Earlier only money capitalists are there. Now knowledge capitalist we are generating. Their money is, their knowledge is safe. When you say the knowledge, how do you define the knowledge? Say PK, present knowledge, P suffix K is equal to the future knowledge, FK is equal to PK, present knowledge, into 1 plus 1 is any individual, R by 100 whole power n. R is the rate of interest of learning, n is the number of time periods. So that knowledge, future knowledge, you can acquire and store it in the academic credit bank. So this way, the no amount of knowledge is wasted, and then it will be accounted for, and you can continue afterwards also. That system is incorporated in this. As we know, the India is the largest population and youngest population, particularly below 25 years, we have around more than 40% of that. That is one of the assets we have. We have to acquire the knowledge of these younger generations. We can go study, then go for job, acquire some knowledge, again come for study. Any time you can come there. That flexibility is incorporated in this NEP 2020, and all the students will gain benefit of this, and only the certain requirements, what are the requirements are there, that is to be taken care of in the various councils, academic council or the etc. Little bit modifications we have to do suitable to this 5 plus 3 plus 3 plus 4 system, and then that is one of the major objectives, and we are going to implement. We discussed these salient features which are having the 4 pillars of this NEP, the General Education Council, Funds Council, National Council for Research. Accreditation, and also so these 4 pillars, how to support the system there, and also the National Research Foundation, recently it was formed also with 50,000 crores. If you want to research, you get some funds there, irrespective of the earlier only institutes or a few agencies are there. All institutes brought into one umbrella, and then you can get the funds for further future research of the people there. Thereby students can enrich their knowledge, teachers can enrich as well as contribute to the knowledge required for the society there. So whatever we are producing, it should be useful to the society. Earlier, you are teacher-centered education. Teacher whatever say, that needs to be followed. These are the courses you have to study. These are the systems there. These are the marks you have to obtain. Now that flexibility, rigidness is made into flexibility. You want to study engineering in your own mother tongue, you can study Hindi, English, Telugu,
Bengali, any language you can study that. First year they have translated there. Earlier you had to study only in English. Those who are good at English, they are able to. Or you had to study Hindi, those were only few medias are there. Now the professional education also made in any language you can study there. And also flexibility also that is given, modularity, certificate, diploma, degree and post-graduation honors degree, likewise it is also given there. The second thing, if you can study here or outside, one study I want to learn music there, engineering what you do with music, but one subject I want to study, I can register with some university there and I can study there. That credits will be put into my credit there. Elective systems will be not necessarily only the science. Art student want to study, yes, you come and study the engineering. Or the commerce student, you can come and study. Earlier only 10+2 science students only entry there. Now that flexibility is given. Anybody who is having the interest to learn a particular subject, you can study and learn that for also there. So likewise several flexibilities have been incorporated in this one, and thereby the student-centered education system has been evolved. So that is one of the things. Students can also learn the better way, and the teachers are also to be trained in tune with these systems there. So that is where the administrators, the chief executives of the organizations are struggling how to make the system, induct the system smoothly without affecting the system there. And hopefully this will give in the 21st century a better knowledge products universities can give to the society. Thank you very much. Thank you. NEP 2020 के 3 साल पूरे हो चुके हैं और उस उपलक्ष्य में भारत भर में इसको लेकर एक जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। और देश की राजधानी नई दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को एक भव्य 2 दिन का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और देश को संबोधित करेंगे। और एनईपी के संबंध में जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है स्टूडेंट्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में और सभी हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो उन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक तरह से एक मिशन मोड में जागरूकता फैलाने के लिए ये पूरा सप्ताह भर का कार्यक्रम है, जिसके तहत हम आज पहला कार्यक्रम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में कर रहे हैं। इस क्रम में ये पहला कार्यक्रम है। इसके बाद मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी और नेरिस्ट और हमारे जो टीवी और एनवीस हैं, ये अपने अपने ढंग से जितना हो सके सरल भाषा में देश के पूरी जनता तक, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है तो केवल वो बच्चा नहीं पढ़ता है बल्कि पूरा परिवार उसके साथ होता है। ऐसे में माता पिता को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनईपी वस्तुतः है क्या। चूँकि हम एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल शिक्षा नीति के तहत आज तक जी रहे थे और तुरंत अचानक हमको जब नई व्यवस्था सामने दिखती है तो एक हवा सा फैल जाती है, लोग डरने लगते हैं, तो अफवाहें भी फैलने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने, क्योंकि इस समय भारत का जो सरकार की जो नीति है वो ये है कि हम केवल मानव संसाधन मतलब प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम एक ह्यूमन रिसोर्स मात्र नाम के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में ये सारी नीतियाँ हैं और इस पूरे राजीव गांधी विश्वविद्यालय में ये जो पूरे आयोजन है उसका मैं अध्यक्ष हूँ और हम आज इसकी पहल कर दी है। हम बहुत जल्दी टीवी में एक दूरदर्शन से हमारी बात हो गई है और हमारे जितने भी डीन्स हैं और हो सकेगा तो कुछ एचओडीज हैं, उनसे हम पैनल डिस्कशन कराएंगे, जिससे और बातें सरल तरीके, क्योंकि 18 पॉइंट्स जो दी गई है वर्टिकल्स एनईपी के अंतर्गत, एनईपी 2020 के अंतर्गत, उन 18 वर्टिकल्स को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी अवगाहनी कर रहे हैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय और बहुत जल्द हम 2 दिन में या तीसरे दिन में दूरदर्शन के माध्यम से डीन्स लोगों की एक पैनल डिस्कशन कराएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम है हमारे बीच, आज मेरे अरुण भूमि के जो फाउंडर जो डायरेक्टर हैं श्री अकन सुनिया से भी मैंने बातचीत की। हम उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए यहाँ के स्टेट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्य रूप से हम कुछ स्टूडेंट यूनियन से भी बात करेंगे, कुछ पेरेंट्स को भी लेके आएंगे, वहाँ पर भी हम डिस्कशन करेंगे और वो जितना जानते हैं उसके बाद जो वो अभी तक नहीं जान पा रहे
उन सब बातों को हम टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से लोगों को फैलाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, रेडियो में एक प्रॉपर बुलेटिन हम तैयार कर रहे हैं, कम से कम 10 बुलेटिन हम तैयार कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी की भी अपनी FM चैनल है, और उस FM चैनल के माध्यम से भी पूरे ब्रॉडकास्ट हम करेंगे, और जिसको हालांकि पूरा राज्य की जो जनता है वो पूरा नहीं सुन पाएंगे, लेकिन दोईमुख इसके आसपास की जो जनता, कम से कम इससे हम जान सकेंगे। फिर उन्हीं बुलेटिन्स को एक व्यापक प्रसारण के लिए हम आकाशवाणी ईटानगर को भी उसके लिए हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, वो भी सरकार का कार्यक्रम है, मुझे विश्वास है कि वो भी मान जाएगी। और इसी तरह से कई एक डिस्कशंस और जो रेडियो के माध्यम से, FMs के माध्यम से, और हमारे टीचर्स इस काम में अभी लग चुके हैं। हमारे यहाँ 44 डिपार्टमेंट हैं, और उन सारे 44 डिपार्टमेंट के टीचर्स मिलकर 44 टाइप के पेपर लिखेंगे, जिसमें ये सारे 18 जो वर्टिकल्स है वो कवर होंगे, जिसको पढ़कर कम से कम जो हमारे पढ़े लिखी जो जनता है वो उसको जान पाएंगे। तो ये एक पूरी कोशिश है हमारी देश के साथ, राजीव गांधी विश्वविद्यालय की भी, कि NEP 2020 को लोग सरल भाषा में बहुत सब लोग जान सके, ताकि भाषा में कोई दिक्कत ना हो। कि अभी मैं देख रहा था सर, VC सर, माननीय VC सर जिस बात की संकेत कर रहे थे, जैसे ABC वगैरह है, बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि इस बार बहुत बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ऐसे बच्चों को हम कैसे एडमिशन दिलवाएंगे, 1 साल का गेप हम कैसे नहीं करेंगे, इन सब बातों पर हम इस समय राजीव गांधी में विचाररत है। ये सारी बातें मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। As a whole, earlier we had a traditional education system in which we just had class 1 to class 12 education hierarchy. However, now we have divided our entire classes into 4 basic structures. The first structure is Bal Vatika, which is your foundational stage, and then we have preparatory class, then we have middle class, and then followed by secondary class. So this makes your 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure. Now KVS is not leaving any stone unturned to implement this NPS, a new NEP, in our education system. For this we have taken several steps. The first step is Bal Vatika. In Bal Vatika we have introduced, it rather gives me immense pride to tell you that even in Arunachal Pradesh we have opened 3 Bal Vatika, namely in KV number 1 Itanagar, KV number 2 Itanagar, and KV Miao. So these Bal Vatikas, they will give us a foundation. Before the child enters into the main realm of the school, he will be given a feedback of what he is going to do, and it will purely be based on a fun-loving and fun-filled education system, so that he is not afraid of entering into the school. Secondly, the use of ICT has been highlighted in NEP. So this is helping all the students to come far away from the far-off traditional system where he just used to have pencils and notebooks and used to read those black and white books for all the knowledge. Now KVS has provided 40 Chromebooks to every KV, and it has also provided 9 projectors along with the iPads, wherein we can use a live class. During the live classes we can show them models, we can show them videos, we can have a live interaction with people all over the world, and they can also experience everything. Like we have modernization of labs, wherein all the activities which earlier just used to be a theoretical part, now the students can have hands-on experience in those activities. So modernization of lab gives a open experience where they can actually perform those activities and learn the knowledge. So it won't be a mere rote learning questions. Earlier what the examination pattern used to be, like we just used to have a book question paper like back exercises or a simple theoretical question. But now we have introduced creative and critical thinking, wherein we make the questions out of situation. So the child is given a paragraph, he has to understand the situation, and then he has to use the acquired knowledge in the classroom to answer those questions. So it requires in-depth knowledge, in-depth clarification, so that the child answers the question. So it will definitely boost the child to try to understand the concept. This will not create pressure on the child, but yes, he'll start learning the concepts in a very fruitful manner, so that he becomes quite acquainted to actually apply the information which he's gathering in the classroom. Then we have FLN, which is Foundational Literacy and Numeracy.
In foundation literacy and numeracy, we are focusing on two main competencies, that is literacy and mathematical competency. So literacy in FLN, for the literacy part, we have focus on class 3 up to class 3 grade, wherein we are devising various activities, various games, so that we can brush up 4 fundamental skills of the students, that is your listening, speaking, reading and writing. So it is not only for English, we are including Hindi as well in this. So for both the languages, English and Hindi, we will be working on these skills. And for mathematical literacy, the focus is on the fact that the student up to class 3 should be able to solve the basic concepts of addition, subtraction, division and multiplication. So for that, we are providing various activities, we are providing various worksheets and we have various games. We are also introducing toy-based learning, wherein the students are using toys. Like we know, almost 85% of the brain development, it takes place before the age of 6 years. So if you are imbibing these toys as one of the modes of teaching in the classroom, I think students will love it. And we are implementing the same in KB. For example, suppose we are teaching a topic on different parts of the body. What we are doing is we are bringing a teddy bear in the classroom, and then the child, using the teddy bear, we are teaching him about the various parts of the body. And then we are using origami for like different means of transport. So the child makes boat, he makes aeroplane, and then he learns what are the different modes of transport. So here we are also bringing in the concept of NEP, which is interdisciplinary approach. So the child is not only focusing on the science subject for modes of transport, he is also introducing art. So this is also bringing us closer to NEP, wherein there is no barrier between co-curricular, extracurricular and curricular activities. A child is open to all. He can go for any vocational activity. So I think this NEP, if it is implemented in our school, which we at KBS are trying to do at the best, I think we'll be able to develop good human beings who are technically sound, who are having a good scientific temperament, and at the same time they are imbibed with social and moral values. Thank you. Thank you. Professor Otem, let me tell you one by one. Professor Otem was talking about, and Director Saab, about the verticals. So what are the verticals? Means component. For any system, we have various kind of components. So NEP 2020, there are 18 components on which we have to work upon. And why these components are necessary and how different is this NEP 2020 than earlier policy, education policy. So as Director Nerist and Dr. Rikam and Oken Saab as well as Madam told you that the reform, this is a reform of a human being. We are trying to introduce new kind of dimension. First, there are only 3 basic things. Any person who is getting any kind of qualification from this country, first of all, person must love the country. They should respect the Constitution of India. And third one is that they must get the freedom to decide their own curriculum. Because earlier we used to give curriculum. That is how the component of multidisciplinary, then skill development, then other components are there. So why it was necessary? Because we felt that earlier, in the earlier policy, we used to give them curriculum and we used to give them lesson. In this particular scenario, they are going to create their own bouquet, guldasta banana unko apna. They are supposed to select which kind of skill courses they are going to take, which kind of value added courses they are going to take, which kind of multidisciplinary courses they are going to take. That is why this is different. This particular NEP 2020 is different than the other policies. And now, first of all, we have one component, academic bank of credit. As 3 earlier speakers or 4 earlier speakers told you, that now student they will be able to get the sabbatical. That means they are doing 1 year study, they will continue, and then they can take the exit. And what kind of paper we are going to give them? Certificate. हम उनको एक certificate दे देंगे. इसके बाद वो जाके नौकरी करे, कुछ काम करे. अगर नहीं भी कर सकता है और पैसे की प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत कंपोनेंट है फीस का, तो वो वापस लौटेगा. बट ये जाने और वापस लौटने के बीच में 7 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. अभी यही कहा गया है. पूरी ज़िंदगी वो जाके लौटेगा ऐसा नहीं है.
सेकेंड ईयर का काम कर लेगा तो उसको हम एक डिप्लोमा देंगे। थर्ड ईयर का जब कर लेगा तो उसको एक डिग्री देंगे, लेकिन वो ऑनर्स नहीं रहेगा। आपको याद होगा, यू रिमेंबर अर्लियर 3 साल में ऑनर्स देते थे, अभी 3 साल में उसको नॉर्मल डिग्री देंगे। फोर्थ ईयर जब करेगा तो उसको ऑनर्स देंगे। ऑनर्स 2 तरीके का होगा, एक ऑनर्स होगा कोर्स वर्क के साथ, एक ऑनर्स होगा रिसर्च के साथ। जब रिसर्च के साथ ऑनर्स देगा तो वो फिर हमारी डिग्री, अगर उसका सीजीपीए हाई है तो सीधे पीएचडी में जा सकता है, और सीजीपीए बहुत हाई नहीं है तो मास्टर्स डिग्री के सेकंड ईयर में जाएगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जाएगा। तो ये वेरिएशंस इसलिए दिया गया कि बच्चे को प्रेशर ना रहे, सारा काम बच्चे के सपनों के साथ घूमता है। तो एक ये कंपोनेंट है, तो हम उसके क्रेडिट को जमा कर लेंगे। और अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि अभी हम काम कर रहे हैं कि अगर बच्चा चाहे तो हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 10 कोर्सेज हैं डिग्री पाने के लिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 6 कोर्सेज वो हमारे साथ करेगा और 4 कोर्सेज वो कहीं से भी कर सकता है, नेहरू से कर ले, दिल्ली से कर दे, जेएनयू से कर देगा, और उसके वो जो कोर्स है उसके रिजल्ट हैं वो हम ले लेंगे और हम अपने यहाँ की डिग्री दे देंगे उसको। मान लीजिए जेएनयू का बच्चा है तो 10 में से 6 कोर्स जेएनयू का करता है और 2 कोर्स हमारे यहाँ ट्रैवल स्टडीज़ अच्छी है, हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स अच्छे कोर्सेज हैं, तो वो हमारे यहाँ से वो कोर्स करेगा, तो वो कोर्स का रिजल्ट हम उसके अकाउंट में जमा कर देंगे, जेएनयू उसको डाउनलोड करेगा, उसको ऐड करेगा, उसको जेएनयू की डिग्री मिल जाएगी। तो ये एक फ्रीडम है मूवमेंट का। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने एक अच्छा काम किया हुआ है, या अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने हमेशा से एक अच्छा काम किया है कि कॉलेज में पोर्टेबिलिटी है, ये अभी पूरे कंट्री में नहीं है। यानी कि हमारा बच्चा एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहे तो वो बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स दे कैन गेट द ट्रांसफर। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे अभी आपको मैंने बताया 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में रिसर्च कंपोनेंट कॉलेज में नहीं है, हमारे पास है, हमने नया कोर्स शुरू कर लिया है। तो बच्चा चाहे तो हम उसको 2 सीट हम अवेलेबल कराएंगे कि जो कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है उसका एक सर्टेन सीजीपीए है, जो गवर्नमेंट ने कट ऑफ दिया है उतना सीजीपीए है, तो वो हमारे यहाँ फर्स्ट कम बेसिस पे 2 बच्चों को हम कंपोनेंट दे देंगे, कॉलेज से भी हम यूनिवर्सिटी में लाएंगे, वो हम एक कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ रहेगी, ये पूरे कंट्री भर में शादी आपको कहीं मिलेगी, पोर्टेबिलिटी की बात। फिर जैसा मैंने कहा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट हमने कर लिया है, ये सेकंड कंपोनेंट है, ये हो गया है। बच्चा 1 साल करेगा तो सर्टिफिकेट, 2 साल करेगा तो डिप्लोमा, 3 साल करेगा तो नॉर्मल डिग्री, 4 साल करेगा तो ऑनर्स डिग्री। फिर तीसरा कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रीम। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स डिग्री पाने के लिए हैं, जैसे डिग्री में एक मेजर कोर्स होता है, एक माइनर कोर्स होता है, फिर मल्टीडिसिप्लिनरी है, वैल्यू एडेड कोर्स है, स्किल कोर्स है, तो ये सारे कोर्सेज को हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, कॉलेज में भी ये लागू हो गया है। तो इस साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। फिर हमारा है कॉमन इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी का CUET जिसको हम बोलते हैं। अभी रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि हम 10 एडमिशन ले रहे हैं आर्ट्स में और साइंस में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो पहले से UG कोर्सेज चल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे BMUS, BFA, BSc जियोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, BCA, इन कोर्सेज में हम सारे एडमिशन CUET से लेते हैं। और जब सीट खाली बचती है तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि सीट खाली नहीं रखनी है, तो हम एक अलग से एग्ज़ाम लेते हैं और उसमें बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। सो वैकेंट सीट हम नहीं छोड़ते हैं, ये नेशनल लॉस भी है। तो इस बार हमने जो ये नया कोर्स चालू किया है, इसको RGU सेट सेकेंड फेज बोलेंगे। उसमें हम 80 बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, 10 बच्चे मैथमेटिक्स में, 10 बच्चे केमिस्ट्री में, 10 बच्चे फिजिक्स में और 10 स्टैटिस्टिक्स में, और फिर 10 बच्चे सोशल साइंस बैकग्राउंड में, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड देन साइकोलॉजी। और इनमें से हम हर डिपार्टमेंट में 3 एडमिशन 30% एडमिशन CUET से लेंगे। तो यानी कि हमने अमलमेशन, जैसे रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि ये अच्छी बात है कि हम सारे देश को अपने कंपोनेंट में शामिल करके, तो ये हम कर रहे हैं। देन हमारे पास ऑनलाइन, जहाँ पे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हमारा सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रूम है या ये मीटिंग के लिए, जो हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन, हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, और इसमें हम ODL मोड पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन मुझे लगता है कि 12 डिपार्टमेंट में UG डिग्री देते हैं और कुछ डिपार्टमेंट में हम PG डिग्री भी देते हैं। तो ये हम कंपोनेंट कर रहे हैं। तो ये चौथा कंपोनेंट, 5वां कंपोनेंट है। फिर हमारे पास एक कंपोनेंट है
स्वयं एंड मूक्स कोर्सेज को अपने करिकुलम में इस्तेमाल करने का। आप सभी को मालूम होगा कि आरजीयू के पास अपने एक टैलेंट हब है, लेकिन यूजीसी का नियम यह है कि अगर हमारा नैक ग्रेडिंग में एक खास परसेंट आता है तभी हम मूक्स एंड स्वयं कोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, वो डेवलपमेंट का काम हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे डिफरेंट प्रोग्राम्स में मूक्स एंड स्वयं कोर्सेज जो प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लेटफॉर्म, उससे कोर्सेज हमारे बच्चे ऑफर कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में। उसकी जो एक प्रॉब्लम है जो हमने सरकार को बताई भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि उसकी टाइमिंग अलग अलग है। क्योंकि आरजीयू का नियम ये है कि जब भी आपका हम सेमेस्टर रिजल्ट निकालते हैं तो हमारे पास सारे रिजल्ट्स होने चाहिए, लेकिन मूक्स के कोर्स की ट्यूनिंग हमारे सेमेस्टर के हिसाब से या पूरे देश के सेमेस्टर के हिसाब से नहीं हो रही है। तो वो एक काम चल रहा है, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारे बच्चे मूक्स एंड स्वयं प्लेटफॉर्म पे जाके कोर्स ऑफर करते हैं। तो ये हमारा 6वां वर्टिकल था, कंपोनेंट था। फिर 7वां कंपोनेंट हमारे पास ये था कि इंटर्नशिप का प्रोग्राम। तो अभी हम लोगों ने सारे गवर्नमेंट के पैरास्टेटल्स को शामिल किया, और इंटर्नशिप के प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी भ्रांति हैं, जैसे कि इंटर्नशिप का प्रोग्राम हम सिर्फ इंडस्ट्री में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम इंटर्नशिप का प्रोग्राम गांव के पंचायत में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो वेरियस काइंड ऑफ स्कीम्स होती हैं उसमें भी बच्चा ये प्रोग्राम कर सकता है, और उसमें वो जो प्रोग्राम करेगा उसकी एक सर्टिफिकेट होती है, वो ले आएगा। तो उस बच्चे उस प्रोग्राम का करना जरूरी है। बगैर उस प्रोग्राम को करे बच्चा सबेटिकल यानी एग्जिट नहीं ले सकता है। तो वो प्रोग्राम सब जगह हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है, और आरजीयू में भी कुछ डिपार्टमेंट में हमने ये इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स को रखा है। और मैं बता दूं कि आरजीयू अपनी एनर्जी को पहले से भी लोगों के बीच में शेयर कर रहा है। हमने इंटर्नशिप का प्रोग्राम आरजीयू के लिए पहले भी किया हुआ है, वो हमारे यहाँ एक रेगुलर फिनोमेना है, तो वो हम कर रहे हैं। देन हमारा ये ज्वाइंट एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम, मैंने आपको बताया कि अभी प्रॉब्लम कहाँ है। हम चाहते तो हैं कि गवर्नमेंट अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से दे दे, और बच्चा मान लीजिए हिस्ट्री में वो ऑनर्स करना चाहता है, और साथ में वो चाहता है कि उसको कॉमर्स में भी करना हो, या पॉलिटिकल साइंस में उसको डिग्री चाहिए। तो हमारे टाइम क्लैश होता है। हम 9:30 बजे से क्लास स्टार्ट करते हैं और 4, 4:30, 5 बजे तक क्लासेस ख़त्म करते हैं। तो टाइम हमारा फिक्स है। अब टाइम फिक्स है तो बच्चा 2 जगह अटेंडेंस कैसे देगा, क्योंकि अटेंडेंस तो उसी टाइम पे होनी है। तो इसलिए वो एक ओडीएल मोड पे कर सकता है और एक ये नॉर्मल मोड पे कर लेगा। लेकिन अगर दोनों रेगुलर प्रोग्राम करने हैं तो गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और हमें प्लेटफॉर्म को टाइम से बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कि हमारे वर्किंग आवर 9 से 5 बजे तक नहीं होंगे, हमारे वर्किंग आवर 24 घंटे होंगे। और जब 24 घंटे में किसी अध्यापक से हम बोलेंगे कि आप किसी कोर्स को 2 बार पढ़ाइए, तो फिर वो अध्यापक हमसे पूछेगा कि सर हमारी सैलरी तो एक बार मिलती है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो भी प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कि अगर टीचर 2 बार किसी कोर्स को पढ़ाता है तो एक बार हम उसको एक्सेस पेमेंट करें। तो ये भी इसको चर्चा करेंगे, सरकार से भी चर्चा करेंगे कि इसको कैसे हम लागू करें, क्योंकि हमें 24 घंटे प्रोग्राम चलाने के लिए स्पेस तो है हमारे पास, लेकिन शाम को इवनिंग के समय हम टीचर्स को इन्वाइट करेंगे कि आप पढ़ाइए। वो सवेरे भी पढ़ा चुका है, शाम को भी कैसे पढ़ाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोविज़न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम करेंगे। इन प्रिंसिपल हम तैयार हो गए। फिर हमारे पास एक इंटरनेशनल अफेयर का ऑफिस है। आज ही हमने एक केस डिस्कस किया है बांग्लादेश से। तो अभी हम देख रहे हैं कि उनके क्योंकि हमारे यहाँ एक आप जानते होंगे कि इनर लाइन परमिट का प्रोविज़न है, और फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस चाहिए होता है। हम चाहते तो हैं ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्लेसिंग्स चाहिए होगी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। फिर हमारी एलुमनी कनेक्ट, आपने देखा होगा कि दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ में एलुमनी एसोसिएशन, यानी कि जो विद्यार्थी हमारे इंस्टीट्यूशन में पहले से पढ़ के कहीं और भी काम कर रहे हैं या हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यूनिवर्सिटी को वो सपोर्ट करें तन मन और धन से। यानी कि दे शुड सपोर्ट विथ फंड ऑल्सो, दे कैन क्रिएट मे बी हॉल ऑल्सो, कोई क्लासरूम कर सकता है, कोई स्कॉलरशिप दे सकता है, कोई गोल्ड मेडल इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरीके से हमारी एलुमनी एसोसिएशन एक्टिव है, वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम उसको रिग्रेस तरीके से कराएंगे। ये हमारा 10वां कंपोनेंट था। 11th कंपोनेंट है ग्लोबल सिटीजनशिप। तो इसमें एनईपी ने ये जो पहली बात तो पैन इंडिया करेक्टर, हमने कहा कि हम सीयूटी से एडमिशन ले रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो ग्लोबल सिटीजनशिप। देन इंटरनेशनल एडमिशन लेंगे, दिस इज़ ऑल्सो ग्लोबल सिटीजनशिप। और कुछ कोर्सेज ऐसे चलाएंगे जो बाहर के बच्चे ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं, एंड इट कैन बी क्रेडिट कुड बी गिवन
टू दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो वो बच्चे जैसे हम ऑनलाइन बैंक में बच्चों का क्रेडिट जमा करेंगे, वैसे वो यूनिवर्सिटी क्रेडिट जमा करेगी और वो अपने बच्चे को डिग्री देगी। सो वी आर इन प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट वन। वी हैव ए रिसर्च सेल ऑल्सो। अभी हमने 1 साल पहले रिसर्च सेल बनाई हुई है। वो गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न था कि उसमें अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ की ग्रांट दी हुई है, तो उस ग्रांट को हमको एक्सेस करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगे। वी आर गोइंग टू डू दैट वन ऑल्सो। देन परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, हमने आपको बताया वो 13 कंपोनेंट में है, वो हम कर रहे हैं। देन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज़ वन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट एवर वी हैड इन आवर सिस्टम। यानी कि उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आसाम में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन पद्मश्री दिया गया है जंगल लगाने के लिए। तो ऐसे मतलब योग्य सिटीजन को हम अपने आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में ला सकते हैं। कोई पद्मश्री हो, या देन जैसे अभी वाटरमैन के रूप में डॉक्टर राजेंद्र का नाम आता है, तो ऐसे लोगों को हम चाहेंगे कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में हम अपने यहाँ उनको लेकर आए, उनको एंगेजमेंट दें। अभी हमारे पास एक सिवाच में वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, और उसके डायरेक्टर को पद्मश्री मिला है। उनको भी ट्राइबल स्टडीज़ में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो प्रोविज़न हम गवर्नमेंट से निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें सैलरी कंपोनेंट भी है, तो वो हम लागू कर लेंगे। देन करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, वो हमने बताया कि करिकुलम फ्रेमवर्क हमने बना दिया, वो लागू भी हो गया। देन मिनिमम स्टैंडर्ड जो है अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू यूजीसी वी हैव न्यू गाइडलाइन। आई थिंक दिस गाइडलाइन जस्ट केम, पीएचडी गाइडलाइन इन 2022, यानी कि 2022 की गाइडलाइन है। उसको हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसके सारे वर्टिकल्स को पीएचडी में हमने लागू किया है, और इस साल जो एडमिशन हो रहा है उसमें वो गाइडलाइन लागू होगी। पुराने बच्चों के ऊपर वो गाइडलाइन लागू नहीं होगी, तो ये हम कर रहे हैं। देन फॉस्टरिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे हमारे बहुत सारे कोर्सेज में जैसे आपने अभी हमारे स्पीकर्स ने बताया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत अभियान, देन रन फॉर यूनिटी, एंड देन दीज काइंड ऑफ वेरियस जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनको हम फ्लैगशिप प्रोग्राम बोलते हैं। यानी कि पूरा भारतवर्ष एक माले में, एक सूत्र में पिरोने की जो बात है, वो प्रोग्राम में करने की है। और एक बात ये भी कही है कि जब हमारे बच्चे, जैसे अरुणाचल प्रदेश आरजीयू का जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पार्टनर है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्टनर है, हमारी पार्टनर। तो हमने बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने 40 बच्चों की टीम भेज के बच्चों को इंटरेक्ट करवाया। अभी हम लोग अलीगढ़ में जाना चाहते हैं और वहाँ के बच्चों को यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो वो प्रोग्राम हम करेंगे जिससे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखें और एक दूसरे को इज्जत देना सीखें। जब बच्चे ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई तरीके से हम लोगों को बोला है, कि बच्चे वॉल ऑफ हीरोज़ पे जाएं। जो हमारे जो वीर गति को प्राप्त किए लोग हैं, उनका जो भी हम लोगों ने एक कर्मस्थली बनाई है, डिफरेंट बोमडीला अगर कोई बच्चा जाता है या तवांग जाता है, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे ज़रूर विजिट करना चाहिए जहाँ पे बच्चों को ये दिखाई दे कि इस देश को बनाने में किन लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो उस जगह जाने से बच्चों को देश के बारे में जानने का मौका मिलता है और अपने लोगों की शहादत याद करता है, तो उसके एक करेक्टर और पर्सनालिटी में रिफॉर्म आता है। ये भी एनईपी का एक कंपोनेंट है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। फिर एक है बेसिक फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़। तो आपने देखा होगा आरजीयू में, अगर आप चाहो तो टीम करके जाएं। अभी हम लोगों ने एकेडमिक ब्लॉक के पीछे एक माइटी स्ट्रक्चर बनाया है पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आरजीयू कैंपस में वो जो बैटरी ड्रिवन वो जो एक ऑटो सा होता है, उसको चलाऊं जिससे बच्चे कम्यूट कर सकें लोकली। अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने हमको एमिनिटीज़ बहुत सारी दी हैं, 50 करोड़ के आसपास। जैसे उदाहरण के तौर पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुझे मिला है, जिसकी जो 20-21 करोड़ का है। या ऑनरेबल सीएम साहब ने, श्री पेमा खांडू जी ने, और डिप्टी सीएम साहब श्री चौनामीन साहब ने, और कैबिनेट ने अप्रूवल देके हमको ये दिया। अभी हमें एक बुद्धिस्ट सेंटर भी मिला हुआ है, हमें 2 नई बसेस मिली हुई हैं, हमें हाई मास्ट मिला हुआ है, हमें रोस्टम मिला हुआ है, हमें स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें
अरुणा ऐसा आपको कनेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बड़े संजीदा से बता रहा हूँ कि ऐसा रिस्पॉन्सिबल स्टेट बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। तो ये कनेक्ट जो है बेसिक फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ को बढ़ाने के लिए है। तो इस तरीके की और सारे प्रयास हम कैंपस में कर रहे हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने बस खरीदने के लिए मुझसे ये कहा था कि क्या हम उसको बैटरी ड्रिवन बस ले सकते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम शहर से लोगों को लेकर आते हैं और हमारे आने जाने की यात्रा तकरीबन 56 किलोमीटर की होती है, और इसके बाद जो मुश्किल भरी डगर है या जो सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है वो हमारा दोईमुख के बाद जो ये हमारी चढ़ाई आती है कैंपस में, यहाँ पे 40-60 बच्चों को भर के एक बैटरी ड्रिवन कार, वो बैटरी ड्रिवन बस खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, वरना सरकार ने उसको देने का मन बनाया था। उसकी जगह हमने डीजल ड्रिवन व्हीकल ले ली है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों के साथ 18 कंपोनेंट NEP 2020 के हमने RGU में लागू कर दिए हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और ये समाज के लिए भी एक अच्छा मैसेज है। तो अब मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, और ओतम साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस पूरे Very good afternoon, and thank you so much, Honorable Vice Chancellor, for allowing me to brief and conclude today's joint press conference meeting being held here at the Institute of Business Education. So as we are celebrating the 3 years of NEP 2020, miles to go is there, but then the step that we have taken for the state government plus Marist or we can Dept alias or maybe other central institute they have taken up in the state of Madhya Pradesh is praiseworthy, what I feel. To say that for that matter, like we have already heard from our speakers, like we have already introduced 3 years plus 4 years honors with, if not, then business papers, which is 4 years degree courses in colleges. And in the university also we've started that program. And one very important good news is that like while implementing this NEP 2020 at the university level in RGU, the government of Arunachal Pradesh has allotted 41 universities including IITs and NITs to start 4 years, to start this integrated teachers education program. And our university, Rajiv Gandhi University, is one of the university which is going to start this integrated teachers education program from this academic session. It's a very good achievement. So we need to celebrate, you see, as we have heard, like why we need this 2020, why it was not before 2019, why it was not in 2010. So many debates and discussions will be there. But then what I feel is that like why we need to replace the education policy which was in existence with the NEP 2020. I firmly believe that whenever we try to make some changes, we already strongly feel and believe that something is wrong or something is there which needs to be get upgraded in the past. So whatever the education policy that we have been following, something was there which was not catering the needs and requirements of the education systems of the country. So accordingly, the new education policy has to replace the old education policy. If we see like two differences that I can make, being a teacher, because we take the classes and teaching learning processes there. Basically, if we see the old education policy, it is good. It's not that whatever the policy the government of India is making, I will not say that policies are wrong. Policies are always good. So therefore, in order to improvise those policies again, they need to make amendments and make new legislation and make that policy effective for maybe prospective way or a prospective way. Now, if we see the course curriculum and the teaching learning process and the course outcomes of the education policy that have been practicing in India, basically those course content were aimed to make the graduates to get government jobs. This was one of the main things that I've observed. Employability is there, but employability where? In the government job. Now, as the population of the country is increasing, the number of students, graduates, they are increasing, and the government cannot alone provide jobs to all of them. So,
alternatives, we should develop alternatives. What is the alternative? We need to bring some changes in the education system. If not government job, then where and what? So these are the alternatives. This new education policy is going to give lots of alternatives and options to the graduates. That अगर मुझे government का नौकरी नहीं मिला तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ. So these are the advantages that we have comes up with this new education policy. And as I said, we have already implemented it. Now, from the school level, as Madam is here, as far as the Neris Dietary is already pointed out, this system is 5 plus 3 plus 4. Now, what is this system? In the earlier cases, it was 10 plus 2 plus 3. Now, you see, it is a bottoms-up system, not top-down approach. Now, what is the difference between bottoms-up approach and top-down approach? What is the difference? The difference, main difference is that, like, here bottoms-up means what? From the nursery level, the student will be trained in such a way that he will choose the field of his interest or her interest of his choice, not by force. So it's the thing. So अगर मैं class 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, तो अभी क्या होगा? Board exam will be in class 11. Class 11 में board exam होगा. उसके बाद अभी का system क्या है? Class 12 में board exam है. Now class 11 में board exam होगा, then he will enter the 4 years course. So ये जैसे अभी भारत जो आज का दिन में हम celebrate, we are celebrating actually. We are celebrating this 3 years completion of this NEP 2020. तो ये 3 साल का अंदर में बहुत सा चीज़ चेंज हुआ है और हमारा आखिरी में मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि like through this NEP 2020, I think maybe our children and maybe our grandchildren, they will be the ultimate, वो जो होंगे इसका फल को उन लोग खाएंगे. Of course अभी जो पढ़ रहे हैं, those who are already intermediate and colleges, they may not get the right fruit of this particular NEP 2020. लेकिन अभी जो class nursery से शुरू होके जो जा रहे हैं, they will really take the feel the right the concept of education, holistic concept of education. वो लोग को पता चलेगा, and by that time will not be there or that is there, but that is different thing. लेकिन जो चीज़ अच्छा चीज़ लेके आया is very overwhelming. यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, especially because I firmly believe that like media, it may be print media or audiovisual media or audio media, whatever it may be, they are considered the fourth pillar of democracy. और आपके द्वारा से और आपके माध्यम से if we can create more awareness. I have seen many students, those who have appeared class 2 examination and they do not know what is CUET. अभी आप 4 year डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अभी तो हाँ ठीक है, इस साल तक हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है. सेंट्रल यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप लोग का इस कॉलेजेस में एडमिशन माफ़ किया जाता है, CUET से नहीं होने से भी होगा. लेकिन एक दिन आएगा कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू CUET टू गेट द एडमिशन इन द कॉलेजेस. तो अभी CUET को इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, उसके बारे में इतना पता नहीं है. तो ये CUET क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, ये चीज़ तो लागू होगा और एक दिन हर कॉलेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो मैं चाहूँगा कि आपका माध्यम के द्वारा से ये CUET के बारे में क्या इसका थोड़ा सा और कवरेज देखे और बच्चे लोगों को खासतौर से स्कूल स्टूडेंट कॉलेजेस में आने के बाद में तो पता चल चुका है CUET क्या है. लेकिन जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, दोज हू आर इन क्लास 10 and 12, दे आर द स्टूडेंट हु विल बी राइटिंग CUET. तो उन बच्चों को हम ये ज्ञान डिसमिनेट करना चाहिए कि CUET में बहुत ज़रूरी है और उसका CUET में एग्ज़ाम किस पैटर्न से आता है स्कूल लेवल में अगर इसे ट्रेनिंग करवा जाए तो इट विल बी वेरी गुड, हमारे बच्चों के लिए वो अच्छा होगा. तो ये है, ये चीज़ सर्टेन मेथड है. और बाकी चीज़ जैसे मैंने बोला आपका द्वारा से ये माध्यम के द्वारा से अगर हम चीज़ को फैलाएं बिकॉज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके बारे में होगा, NEP के बारे में और ज़्यादा मतलब अरुणाचल प्रदेश क्या क्या अभी काम कर रहा है. जैसे वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग, आवर प्रीवियस स्पीकर दे हैव सेड दैट वी हैव अचीव्ड अ लॉट एंड आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली द एजुकेशन सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी सी इज ऑल्सो टेकिंग कीन इंटरेस्ट. वो भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट को लेके ईरा सिंगला है स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो खुद का पर्सनल इंटरेस्ट में भी बहुत कुछ काम NEP के ये तहत करने की कोशिश करता है और करता भी है. So I hope that they will not be far, that maybe our children, they will get, all of the children, they will get holistic education. So thank you so much. Thank you. First of all,
see, we feel that way. It is just a mere perception that uh, uh, network, there's a network problem in Arunachal Pradesh. But when we see the implementation of NEP 2020, involvement of technology is at what place? Like MOOC courses. So in colleges, MOOC courses, students are not offering much. And more so, wherever there's a gap between ground situation, ground reality, and then what must be there. So government of Arunachal Pradesh is keen to look into that matter. So यहाँ पे जो कंपोनेंट हमने अभी जो लागू किया है, इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है. जैसे बच्चों को हमने कोई ऑनलाइन कोर्सेज हम दे नहीं रहे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग परसेप्शन है. वो CUET के एग्ज़ाम से संबंधित हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि करंटली जो ऑल पैन इंडिया कंपटीशंस हैं, जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, वो सारे तो हो ही रहे हैं. तो जब वो हो रहे हैं तो ये CUET भी हो सकता है. दूसरा, जैसे हमने अपने कैंपस में नेरिस्ट में करीब 100 बच्चों से ज़्यादा का स्पेस है कंप्यूटर में एग्ज़ाम देने के लिए. हमारे कैंपस में मारपे सोरा साहब इसको देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर से. तो हमारे यहाँ भी ये स्पेस है, करीब 150 बच्चों का एग्ज़ाम हम करा रहे हैं. अभी हम फैसिलिटी जोड़ रहे हैं, तो 200 बच्चे एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम एक दिन में एक साथ लिख सकते हैं. तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी है नहीं. तो और दूसरी बात मैंने जैसे बताई कि पोर्टेबिलिटी रहेगी, तो इसलिए बच्चा उसका यूज़ करेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी दिखाई नहीं देती है. और जहाँ आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम लोग इस सिस्टम में आए हुए हैं. और क्या सवाल हो सकता था? या प्लीज, व्हाई नॉट. In fact, thank you for the question, which is relevant to the thing. This we started 3 years before when COVID started there. Students are scattered all over in the northeastern India. How to reach the knowledge to the students, how to conduct the examinations online, and how to evaluate the answer scripts online and declare the results. For that, Google Meet, etc., all of you now there to reach the students. There is a limit, 50 students we can reach, and then a link is to be sent there, and they will be add on to that, so that our lecture can be listened to them, and they will be able to interact also there. The second one, once the courses are over, they want to give the exam. How they will do online examination? So Perfecta is software also developed there. Those things we have not developed. In fact, the software engineers, they have developed that system. We purchased from that. Through that one, online you can write the exam, and we can see the papers at our desktop, and then we can evaluate the papers there, give the marks there, and totaling etc. will be done. Grading can be done. So that system. Also the technological, now digital India, make in India, so many things are coming. We are seeing that. If I am here, I am connected there, means this is digital. If this is not there, only in my room landline phones are there. So all the citizens became netizen. So nowadays these technological things which are available can be used for learning purposes there. Even if you want to say different countries, I had been to the China there. I don't speak Chinese language, and they could not understand that. I have written in English on this mobile. They translated, they selected the text, translated in Chinese. They have seen in Chinese. They have written in Chinese, and again that is translated to English. I saw and I could understand that. So these systems are already existing there, and in India also it is available, because we have 200 languages. It is very difficult to communicate one to other. That system will also address the things. Thank you. Thank you. And let me tell you, last but not the least, you see, for example, during COVID also we did all exams. So what we can do is that sending the email, sending the WhatsApp message, maybe in particular given time, maybe that boy and girl, our student is not within the network reach, but certainly in the evening headquarter or somewhere he or she will come. So lesson, he or she can receive the lessons. And we see Tawang, among the colleges, they did the ABC registration 100%. So that means if one is very keen to do something, so Tawang no problem, Teju no problem, then Pasighat no problem, DNGC, Itanagar no problem, and RGU campus. We have 5 campuses where examination could be done. Sitting capacity in these places, in one particular sitting,
we have about 2,000 plus seating capacity. So any exam for a particular paper, there is no student more than this number. Only maybe one common environmental science, yeah, B.Ed. So all these 5 places may be made available to student to write exam. तो ये एग्ज़ाम के समय कर सकते हैं, बाकी समय उसको ट्रेवल करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो लेसन ले सकता है. तो जहाँ पे चाहे वहाँ पे रहा है, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी सॉल्व. वाइस चांसलर्स की मीटिंग होती थी, आपको याद होगा कि तकरीबन 2 वीक पहले विजिटर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सारे वाइस चांसलर एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, तो 162 इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं और डायरेक्टर्स NIT नेरिस्ट वगैरह के डायरेक्टर वहाँ पे थे. तो वहाँ पे जो बात हमें समझ में आई, जो निकल के बाहर आया, क्योंकि उसमें ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री प्रधान साहब, वो भी थे लगातार. प्रधानमंत्री महोदय के एजुकेशन एडवाइज़र श्री अमित खरे साहब थे. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो एडवाइज़र हैं वो वहाँ थे. और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 बार, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने 2 बार हम लोगों को एड्रेस किया. जो समझ में आया कि इच्छा शक्ति की कमी. हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे उदाहरण के तौर पे करिकुलम बनाना हो तो हम इंतज़ार करते हैं कि UGC के वेबसाइट पे बना बनाया करिकुलम जिसको हम लर्निंग आउटकम बोलते हैं वो आ जाए तो हम उसको देख के अपना बना लेंगे. हमने अपने यहाँ प्रयास किया, आप सब इसके लाइव विटनेस हैं, हम लोगों ने अपना सिलेबस बना लिया. तो ऐसी सभी यूनिवर्सिटी, तो RGU इस समय लीडर के रूप में देखा जाना चाहिए, तो हमने बना लिया. ये बात अलग है कि हमने भी 2 सेमेस्टर का बनाया है, बाकी सेमेस्टर बन जाएंगे. तो ये सभी में होना चाहिए. तो हम डर जाते हैं. फिर क्या प्रॉब्लम थी, हमने सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स को क्यों इन्वाइट किया, 2 बार इन्वाइट किया, इसलिए इन्वाइट किया. और स्पेशल सेक्रेटरी मिस ईरा सिंघल साहब भी उसमें थी. तो उसमें क्यों ऐसा मैंने किया, इसलिए किया कि एक माहौल बनाने की ज़रूरत पड़ती है. बगैर माहौल, बगैर कम्युनिकेशन के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लोगों के बीच में डर है कि ये बहुत कठिन सिस्टम है, इससे नुकसान होगा, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसको दूर करेंगे. और 1-to-1 बेसिस पे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो माहौल डेवलप होगा. बगैर माहौल डेवलप किए हुए, बगैर सूचनाओं के आदान प्रदान किए हुए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है. तो सूचनाओं के आदान प्रदान के अभाव में अब ये देखिए कि 2 साल बाद ये जो प्रोग्राम अपना ये हो रहा है, तो ये प्रोग्राम ये पहले भी हो सकता था, लेकिन ये महसूस किया गया कि 3 साल में वो जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो मिली तो कितनी मिली, तो इसलिए ये एफर्ट डाले गए. तो सिर्फ एक ही बात पकड़ लें कि इच्छा शक्ति के अभाव में हम लोगों से डिले हो रहा है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे अध्यापकों को मालूम है अभी कॉलेज में नंबर पूरे नहीं है, तो सरकार का काम है कि रिक्रूट करें. जहाँ पे कोर्सेज आपको जान के ताजुब होगा, 1-2 स्टेट ने सभी कॉलेज में सभी कोर्सेज चला दिए हैं. जैसे पहले वहाँ आर्ट्स चलता था, वहाँ साइंस भी चल रहा है, कॉमर्स भी चलेगा. आपके पड़ोसी राज्य में, तो हमारा राज्य इसके बारे में विचार पहले ही कर चुका है, मैडम ईरा सिंघल ने बताया. उसको इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी. हमारे शायद 1 या 2 कॉलेज में ही साइंस है, तो विद्यार्थी को मौका ही नहीं मिलता है. उदाहरण के तौर पे मिचुका में हमारे पास साइंस कॉलेज नहीं है, कॉमर्स भी नहीं, मुझे लगता है आर्ट्स बैकग्राउंड का एक कॉलेज है. तो मिचुका का बच्चा अगर पढ़ना चाहे साइंस, ऐसा तो है नहीं कि मिचुका में बच्चे साइंस नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उसको एवेन्यू नहीं है, तो हमें एवेन्यू क्रिएट करना है. और एवेन्यू इच्छा शक्ति से क्रिएट होता है. रही बात ग्रांट और फंड की, तो सरकार ने ग्रांट एंड फंड के लिए कभी मना नहीं किया. आप प्रपोजल दीजिए, वो एनालाइज होगा और ग्रांट्स आपको मिलेंगे. तो ये महसूस होता है कि जो चुनौतियाँ हैं वो सिर्फ एक ही चुनौती है, इच्छा शक्ति की कमी. तो उसको अगर हमने दूर कर लिया और एक दृढ़ मस्तिष्क से हमने निर्णय लिया, जैसे अभी हमने UG कोर्सेज चला लिए, तो बहुत सारे टीचर अभी प्रसन्न भी हैं कि एक नई हम PG चलाते थे ना, यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 विषय में UG चलाते थे. तो नया ब्लड जो इस कंट्री का है, युवा चेहरे देखने को मिलेंगे, हम उन्हें अच्छा ट्रेन कर पाएंगे. तो ये इच्छा शक्ति की है. और आप देखें कि जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारे, तेजपुर आपकी है, नज़दीक में है, ये यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज को चलाती है. तो मेरा ये मानना है कि वो जो हमारे कॉलेजेस हैं वो आगे पीछे अगर वो चाहेंगे, अभी हमारे पास एक स्टेट यूनिवर्सिटी आ गई पासीघाट में, आपने देखा होगा, जिसके वाइस चांसलर का नाम प्रोफेसर
तोमोरिबा साहब है, वो अपने यहाँ ज्योग्राफी में प्रोफेसर हुआ करते थे। तो वो धीरे धीरे कोर्सेज को लेकर आएंगे, कॉलेज चाहे तो उनके साथ जुड़ जाए, हम यूनिवर्सिटी बन जाए, लेकिन हम किसी को दूर जाने को नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों को दिल के नज़दीक ही बुलाना चाहते हैं। तो ये हमें मिल के काम करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि आज इसकी आवश्यकता पड़ी, और प्रोफेसर ओकेन ने तो बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया कि हम लोग कई मीटिंग करेंगे दूरदर्शन की मदद से, रेडियो प्रसार भारती की मदद से, जिससे एक